Hello champions, welcome to the next lecture on the CSIR NET, GATE and the IIT JAM mathematics. Today I will explain you again the differential equations but a very special kind called as the steady state solution. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now if you look about these problems, for example it's IIT JAM 2024, have you seen about the word steady state in the given statement? The answer is no. Fine. Similarly, if you look about the second question, again, the steady state is the word of the steady state is not given to you. If you look about the third questions, again, the word steady state is not given to you. Again, the journal solutions, either the question is related to the GATE mathematics or related to the IIT JAMs, or you can say related to the CSIR NET recent year papers. How you can solve all these questions within the 15-second time periods that I will teach you in this video. You must watch the video till the end so that you can learn the shortcut tricks. First of all, how you can solve this question? If you are in the students or you are the champions, how you can solve these questions? Clearly say you can solve, or whenever you see the equations, you will see this equation is my linear in y. So you can find the integrating factor e raised to power p of dx, and then you can find the solution is y into integrating factor, which is integration of q into integrating factor dx plus c. ऐसे ही solve करोगे, and after solving this you can find the limit and get the right answer. But how many minutes you needed while solving the problem? You need at least 5 minutes while doing the calculation of all this process. But believe me, in the examination you have a maximum 1 minute time periods so that you can get the answer in this given stipulated time period. Fine. So how you can solve them, and why the students always suffer the 5 minutes time periods? Because the students generally don't follow my advice. They generally don't follow and subscribe my YouTube channels, so that they will not get any proper materials or the shortcut tricks. Moreover, I will tell you also in my each video when this method is applicable and when not. Fine. तो अगर मैं आपकी जगह पे हूँ एग्जाम में, और अगर मैंने ऑलरेडी हरीश गर को फॉलो कर रखा है और एंड देन वॉच ऑलरेडी देयर वीडियोस एंड एडवाइस देम, फाइन, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को 15 सेकंड ट्रिक से सॉल्व कर पाऊंगा? फाइन. तो अगर मैं डायरेक्टली अगर आपकी जगह पे हूँ तो कैसे सॉल्व करता मैं? बिकॉज आई कैन थिंक अबाउट दैट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द स्टडी स्टेट. फाइन. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टडी स्टेट है भी है कि नहीं है. फाइन. तो अगर मैं आपकी जगह पे होता देन आई विल गेट द आंसर इज 1/3. If I look at the second questions, read the statements. Your target is I can get the answer is 1/5. Third question को अगर मैं solve करूँ आपके लिए, then I will get the answer is 1/10, and so on. Fine, and so on. Each problem I can solve it in a 15-second time periods. But अगर आप सोचो सर ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो you have to watch the video till the end and kindly follow my advice so that you are not in the trap of the 5 minutes time periods. You are always focused in the 15-second time periods. So let's start with firstly the sum tricks. Find how you can apply the steady state tricks. Fine. For more detail, you can follow my playlist of the IIT JAM mathematics. The last lecture was on the Wronskian. You must watch about the Wronskians so that you can learn the concept of the differential equation in a simple manner. Apart from that, the complete syllabus videos are already uploaded in this playlist. You can follow them. If you are the students of the GATE or the CSIR NET, you can follow the GATE mathematics and the CSIR NET mathematics. You can see the various lectures. All are dedicated to the CSIR NET and the GATE mathematics. First of all, whenever you have the differential equations like dy over dx, fine, or you can say d square y over dx square, fine, or you can say d cube y over dx cube, and so on. Look at that, which one is my independent? Look at that, which one is my independent variable? Fine. And which one is my dependent variable? Which one is the independent variable in this particular example? X. And whenever you will see in the given statement x is greater than 0, fine,
or or whenever you will see x approaches infinity, that means you have to apply my steady state shortcut tricks. फाइन. अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है, dy over dt plus 4 times d square y over dt square and so on. What is the independent variable? Independent variable is my t. So when you can apply the steady state, whenever t is greater than 0 given and t approaches to infinity. But make sure, if it is given that t approaches 0, 7 or t belongs to the 0, 9, fine. So then can you apply the steady state? Not. You can never apply the steady state solution because the condition t greater than 0 not satisfied. What is the meaning of the t greater than 0? T greater than 0 means t is belongs to the 0, infinity. But here the bounded, is the upper bound is my bounded. Fine. पहली बात clear? So now you can see x belongs to the R and your target is to find the x approaches infinity. Yes, you can apply the steady state solution. Can you apply the steady state in the second example? Yes, because x approaches infinity. Yes, you can apply. Can you apply the steady state? Yes, because x approaches infinity. Fine. Again, you can see x approaches infinity. Yes, you can apply the steady state. Fine. Can you apply in this case steady state solution? Yes, because remember this is a partial differential equation. Fine. मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, चाहे पार्शियल है, चाहे रियल एनालिसिस है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, द सेम ट्रिक इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर. Fine. So that means in this case x is not goes to the infinity. If you want to apply the steady state, you have to apply on the t, not on the x. Fine. Not on the x. Clear? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever you have the differential equation, say d square y over dx square plus b dy over dx plus c y which is equal to d. Fine. Right hand side it may be the function of the x or it may be constant. Now whenever you want to apply the steady state, you have to check the two properties. First one, as I mentioned you, the independent variable must be greater than 0 or it goes to either as a plus infinity or as a minus infinity. Fine. Second point, the coefficients a, b and c must be positive. Fine. Or 0. Fine. Fine. Must be positive or 0. And the right hand side must be finite. The right hand side must be finite when x approaches to either the plus infinity or minus infinity depending upon the given statement. Whenever these three conditions are satisfied, then you can apply my steady state solutions and get the answer in a 15-second time period. अगर आप इन सभी चीजों को किसी एक चीज से रिलेट करो, फाइन, वो क्या है? बाउंडेड. हाउ यू कैन चेक अबाउट द बाउंडेड? इफ आई से कैन यू प्रूफ दैट y इज अ बाउंडेड फंक्शन, उसके लिए क्या प्रूफ करते हो आप? व्हाट यू वांट टू प्रूफ इन अ बाउंडेड फंक्शन, दैट मींस लिमिट ऑफ द yx as x approaches infinity. If this limit is my finite, then you can say y is bounded. ऐसे ही तो होता है. फाइन. तो इसका क्या मतलब हो गया कि कभी भी आपको कभी भी बाउंडेड प्रूफ करना हो, then you have to apply my steady state approach. Fine. Clear? Now whenever you have whenever these three conditions are satisfied, what is the meaning of the steady state is that is independent of the time. Then you can say d over dx goes to the 0. Fine. d square upon dx square goes to the 0 and so on. That means ये नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? 0. You will get as a 0 and you can find the value of the limit x approaches infinity of the yx from the required expressions.
फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई द शॉर्टकट ट्रिक्स इन द 15 सेकेंड टाइम पीरियड. फाइन, आई होप यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल. फाइन, तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने चैनल को फॉलो कर लिया होगा और इस अप्रोच से आप कभी भी सॉल्व नहीं करोगे. फाइन, नाउ first of all, what are the coefficients? 1, it is always a positive, and 1 is a positive, so the first condition is satisfied. Fine, x approaches infinity is given, a, b, c are finite, right hand side must be finite, but here the right hand side is not a finite. Fine, but if you want to apply the steady state solution, what does the meaning? That means d over dx must goes to the 0. So that number will be 0. The required expression becomes 3x square y is equal to x square. Now you can see if I cancel the x square, your expression is, now you can see the right hand side is finite. The third property also satisfied. Therefore, you can apply the limit as x approaches infinity. So your answer is y will be 1 over 3 is the right answer. There is no need to solve either by the homogeneous method, variable separable, linear, Bernoulli, or variation of parameter and so. Look at the second one. Again, x approaches infinity. You have to apply the steady state solution. Whether coefficients are my positive, yes. Right hand side is limit is positive again. So that number will be 0. That number will be 0. So 5 times limit of y is equal to 1. So answer is 1 over 5 is the correct answer of the. यहाँ पे कुछ भी दिया हो, there is no worry about that. Fine. अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या था आपका, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं इन एग्जामिनेशंस? अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं करा, यू हैव टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस. 2m plus 5 is equal to 0. Fine. You have to write the roots, b square minus 4ac divided by 2. That is a minus of 2 plus minus 4 iota over 2 minus 1 plus minus 2 iota. Then you can find the particular integral. Fine, and then finally you can write the solution is e raised to power minus x c1 cos of 2x plus c2 sine of 2x plus particular integral. If we find the particular integral, your answer will be 1 over 5. Fine, and then you can take the limit and then you can use the y of 0 is 0, y dash of 0 is 1. You can find the value of the c1 and c2. Fine, and definitely that take at least 5 minutes in the examinations. और मोर ओवर इसमें गलती होने के भी चांसेस जा रहा है, अगर कोई प्लस माइनस गलत हो गया यू विल गेट द रॉन्ग आंसर्स. बट इफ यू सी माय अप्रोच you will get maximum 15 second time picks. Fine, that's why I'm asking you, follow my advice, follow my channels and follow my videos to crack the examination in a simple manner. Okay, look at this. Can you apply the steady state solution? Yes, because the x approaches infinity given, coefficients are my positive, and whenever x approaches infinity, limit is my finite. Fine. So yes, you can apply the steady state approach. Once you can apply the steady state approach, first value will be 0 plus 10 limit of y is equal to 1. So what is the answer? Limit of y is 1 over 10 is the right answer of the problem. ये तो आपको एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, आप ओरली भी देख कर सकते हैं. Okay, the journal solutions. Fine. Whenever x approaches infinity, that means yes, we can apply the steady state, provided few conditions satisfied. पहली x approaches infinity होना चाहिए, that's given. Second क्या होना चाहिए, each coefficients must be positive. Fine. So coefficient 1 is a positive, that means b must be greater than 0 or equal to 0. C must be greater than or equal to 0. Fine. Or third is right hand side limit. The right hand side limit is finite whenever x approaches infinity or minus infinity. Fine. And 0 तो finite ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, whenever b and c both are my positive. B is negative, wrong. C is negative, wrong. Both are my positive. D is wrong is the right answer of the problem. So you can see
within the 15 second you can get the answer in a right time. Otherwise सेकंड मेथड क्या होगा, अगर आपको मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं मालूम और अगर आपने मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं देखी तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड वे कैसे होगा, यू कैन चूज एनी नंबर बी, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, इट्स एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0. यू कैन चूज बी एंड सी इन सच ए वे सो दैट इसके फैक्टर बन जाए, तो मैं b को -3 ले लेता हूं और c इज माई पॉजिटिव, c को मैं 2 ले लेता हूं, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ना आपके पास m square minus 3m plus 2 is equal to 0. That implies m is my 2 and 1. Fine. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, c1 e raised to power 2x, c2 e raised to power 1x. Whenever x approaches infinity, can it goes to the 0? Can it goes to the 0? No, it goes to the infinity. So that means the first option is cancel. फाइन. और अगर आप इसको माई अप्रोच से सॉल्व करो तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ दी वाई इज 0. फाइन, तो वो 0 ही आ रही है. लुक एट द सेकंड ऑप्शन, बी इज माई पॉजिटिव, सी इज नेगेटिव, तो बी की कोई वैल्यू ले लेते हैं. फाइन, ऐसी वैल्यू ले लो बी की और सी की जिससे ये क्या हो जाए, इसके रूट्स बन जाए. तो मैं बी पॉजिटिव में कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, जैसे बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू -4. आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एम स्क्वायर प्लस 3m -4 0. तो द रूट्स आर m इज इक्वल टू -4 एंड 1. तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, c1 e raised to power -4x, c2 e raised to power 1x, एंड दैट विल गोस टू द इंफिनिटी, तो ये 0 को नहीं जाएगा. फाइन, व्हेन बोथ आर माई पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई एक अगेन से ऐसे नंबर ले लेते हैं जिसके रूट्स बन जाए. सो m आई कैन चूज एन एस, कोई एक नंबर ले लेते हैं 3 और ये 2 ले लेते हैं. फाइन, सो रूट्स आर -2 -1, सो सॉल्यूशन विल बी e raised to power -2x e raised to power -1x, and that is also goes to the 0. बोथ आर नेगेटिव, अगर आप दोनों नेगेटिव ले लो तो कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, -5m -6, तो आपके रूट्स क्या आ गए इस केस में, 6 and -1. सो क्लियरली से द फर्स्ट पार्ट विल गोज टू दी इंफिनिटी, ये आपका इंफिनिटी हो गया. और देखिए इतने सारे केसेस को सॉल्व करने में आपको कितने मिनट्स लगेंगे, एटलीस्ट 7 मिनट्स. फाइन, तो जैसे 7 मिनट्स लगे आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. फाइन, चलिए एक और कंडीशन मैं इसके साथ ऐड कर दे रहा हूं. फाइन, इसके साथ फाइन, इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा, what is the discriminant of the auxiliary equations, that is a b square minus 4ac must be positive. Fine, चलिए look at the next one. Okay, again x approaches infinity, so that means the steady state is applicable provided the coefficient must be constant, positive constant, and the right hand side limit is finite. So इसका मतलब 2k must be greater than 0, L must be greater than 0. So that means K must be greater than 0, L must be greater than 0. So you can see K is less than 0. Wrong answer. Fine. K, okay, fine. Now there are the 3 options. Fine. Now you can check about the discriminant. इसकी auxiliary equation क्या बन जाएगी, m square plus 2km plus L is 0. The discriminant should be greater than 0. Fine, so that means b square minus 4ac must be greater than 0. That means k square must be greater than L. But he said k square must be greater than L. K is a positive, L is a positive. लेकिन यहां से तो ये less than 0 है. Fine, यहां पे भी आपका less than 0 है. That is a wrong. So only D option is the right answer. Okay, look at this one. Now, can you again, now it's a PD, so can you apply the steady state solution? So if you take t approaches infinity, so it means del upon goes to the 0, del square upon del t square goes to the 0. So आपकी इक्वेशन क्या बन गई, del square u divided by del x square is equal to 0. Fine, but
कैन यू अप्लाई द स्टडी स्टेट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स प्लस बी। फाइन। अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आप लगा सकते हो, दिस इज एप्लीकेबल वेन एवर टी अप्रोचेस इंफिनिटी। फाइन। लेकिन इस केस में यू कैन सी टी इज नॉट satisfied by this condition, so you can never apply this condition to find the a and b. Again, t is not greater than 0 or t is not infinity, so that means you can never apply partial derivative of u condition at here. Can you apply this condition? Yes, you can apply this condition to find the value of a and b, but make sure आपको निकालना किस पॉइंट पे है, find pi by 2 and pi by 2. This is the solution only when t is greater than 0 or you can say t approaches infinity. यहाँ पे देखिए, क्या ये t approaches infinity है? No. t greater than 0 तो है, but t greater than 0 का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू हो, greater than 0 का मतलब t की वैल्यू आपके पास 0, इंफिनिटी में होनी चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे तो इंफिनिटी नहीं है, तो इसका मतलब दिस ऑप्शंस यू कैन नेवर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन। फाइन। स्टडी स्टेट सॉल्यूशन से इसका आप आंसर नहीं निकाल सकते। फाइन। सो दैट मीन्स क्योंकि आप कहीं एग्जाम में देखो कि सर टी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ तो आप सॉल्यूशन निकाल दो। फाइन। और अगर आप सॉल्यूशन निकाल दोगे इस कंडीशन से तो आपको ए भी 0 आएगा, बी भी 0 आएगा, तो आंसर आपका हो गया 0। इसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर चेक कराओगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। फाइन। तो यू कैन नेवर अप्लाई दिस स्टडी स्टेट बिकॉज जो आपको पॉइंट पे निकालना है वो स्टडी स्टेट नहीं है। क्लियर। तो फिर इसको करेंगे कैसे, these are wave equations. Fine. You can watch about my shortcut tricks on the wave equations which is available in this playlist. I will show you, just wait, it will be, you can see my playlist for finding the solution of the wave equation again in the 15-second time periods. You can watch my lecture wave equations, you can see that. Fine. तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, but that is not the objective of this question. आपको given क्या है, u of x comma 0 is sine x. So can you write the solution x comma t directly? If you compare u of t c square u x x, what is my c? C is equal to 2. Then your answer will be cos 2t into sine x. Remember my shortcut tricks. Whenever you have the solution either in form of the sine nx or cos nx, then you can write u of x comma t is cos nct sin x, और अगर ये सेकेंड टर्म है again you can write as a cos nct cos nx. Fine. You have to add this term. तो यहाँ पे आप n कितना है 1, c is my 2. Fine. Now you can find the values at u pi by 2 pi by 2. So that will be cos of pi and sine of pi by 2. Answer is -1 is the right answer. तो फिर से देखिए, आपको 15 सेकंड ही लगे ना सॉल्व करने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू मस्ट वॉच अबाउट द वेव इक्वेशंस, हीट इक्वेशंस, लैपलेस इक्वेशन, ऑल आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट। फाइन। अच्छा, एक और ट्रिक बता रहा हूं इसी क्वेश्चन के लिए। अगर इफ u of x comma 0 is given to you, फाइन, अगर यहां पे आपको 0 दिया होता, देन यस यू कैन अप्लाई द स्टडी स्टेट अप्रोच। तो आप मेरी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करते, देन योर आंसर विल बी 0। फाइन। वो हमने अभी देखा था ना, आपका सॉल्यूशन क्या आया था, ए एक्स प्लस बी। फाइन। यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच, दिस इनिशियल कंडीशन, you will get a b is my 0, therefore your solution is my 0. So at any point is also 0, लेकिन उसके लिए ये इनिशियल पॉइंट आपका 0 पे होना चाहिए। Okay, look at that. Can you apply the steady state? First condition satisfied. Coefficients are my positive, fine. But you can see the right hand side. Can you find the limit of the right hand side? And now it's independent variable is t. Is it finite? As t approach, is it a finite? No.
दिस इज नॉट ए फाइनाइट. फाइन. अगर ये फाइनाइट नहीं है, then what is the shortcut tricks? How you can find the solutions? Again, this part will be 0. There is no issue. Fine. So then your answer will be 4 limit t approaches infinity of y, and it's a e raised to power minus t. If you multiply this expression by e raised to power minus t, the right hand side is only 2. Fine. Fine. Then you have to divide it by, you can write the auxiliary equation firstly. It's a m square plus 4. यही तो बनेगी ना इसकी auxiliary equation राइट हैंड साइड की. once the right hand side limit is not a finite, fine, then you have to divide it by substituting the value of the m. What is that? Fine. So you can substitute m is equal to alpha. m is equal to alpha करके कितना आंसर हो जाएगा? 2/5 is the right answer of the problem. फॉर एग्जाम्पल अगेन, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन होता है, आपके पास 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 4e रेज टू पावर 2t, मान लो. फाइन. सो अगेन योर टारगेट इज टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन. फाइन. तो जैसे आप e की पावर माइनस ऑफ t करोगे, फिर भी ये आपके पास फाइनाइट नहीं होगा. फाइन. तो अगर मेरे को निकालनी हो लिमिट e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2t इंटू y ऑफ t, तभी तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव फाइनाइट आएगी आपके पास. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4. अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? 2. तो यू कैन राइट इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए. 4 प्लस 4 प्लस 3. फाइन. 4/11 इज द राइट आंसर. Look at that. Again, t approaches infinity. So can you apply the steady state? If you want to apply the steady state, yes, you can apply on the t, but you can see u of x comma 0 is not a 0. Moreover, you can see t is equal to 1, which is not goes to the infinity. So no steady state solution will be applicable. Fine. So then you have to solve it in a journal method. And how you can solve this problem? You can watch about my lecture on the heat equations. What is the shortcut tricks? Again, you can get the answer in the 15-second time periods. आपके पास solution क्या दिया हुआ है? Solution is my sine of x. If you compare them, del u by del t is c del square u upon del x square. Then your solution will be e raised to power minus n square ct sine of whatever are there. If I return this is in terms of the sine nx, then you have to write sine nx. Fine. If you compare, clearly say n will be 1. What is the c? C is also 1. So your solution in journal, it will be e raised to power 1 sine of x. Fine. अब आपसे जो पूछा गया है उसका आंसर निकाल दो. पाई बाय 2 एंड 1 पे कितना आंसर हो गया? साइन पाई बाय 2 इज 1. e raised to power minus 1 is the right answer of the problem. तो देखिए फिर से आपको 15 सेकंड टाइम पीरियड ही लगा है. Then for that case you must watch about my heat and the wave equations. Fine. But अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 होती, then you can apply the steady state. Look at this case. Again, t approaches infinity. It's a recent year paper. You can apply the steady state. Fine. And you can see u of x is equal to 0. Yes, you can apply the steady state, but on the t, that means partial derivative with respect to t must be 0. So that number will be 0. Therefore, 16uxx plus 2 is equal to 0. That means uxx will be minus 1/8. Fine. Now uxx is my constant. That means u is a polynomial, or you can say is a function of डिग्री कितनी होगी उसकी? 2. तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा. योर आंसर इज ऑलवेज, यू कैन सी t अप्रोचेस इंफिनिटी. फाइन. तो इसका मतलब यस, आप स्टडी स्टेट से इसका आंसर 2 मिनट में निकाल सकते हो. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है. इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. इसकी डिग्री कितनी है? 4, बट आई नीड अ डिग्री 2. अगेन इट्स अ क्यूब. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 चाहिए हमें. अब यहाँ देखिए डिग्री 2 मिल गई. अब आप इसका uxx निकाल लो.
वो कितना आ रहा है आपका -2/16 which is same as of the, so the right answer is 4 is the correct answer. And you can see that it's a recent year paper. How many seconds you are needed? Maximum 15-second time. Okay, look at the next one. Consider the non-homogeneous ordinary differential equations bounded. What is the meaning of the bounded? That means your target is to find x approaches infinity. So can you apply the steady state solution? Fine. Yes, we can apply provided some conditions are satisfied. Coefficients are my constant, positive, fine. Right hand side limit must be finite. If you take limit x approaches infinity of sine e raised to power minus 5x, तो ये कितना हो जाएगा? That will be 0. Sine of 0 is 0, which is finite. Fine. So that is yes, you can apply. If you apply the steady state solution, that will be 0. That will be 0. It's a 6 limit of the y, and the right hand side limit कितनी आ गई आपकी? 0. So that means limit x approaches infinity of y is my 0, which is my finite. So what does it mean? If the limit is my finite, that means the function y is my bounded. Every solution of the ODE is bounded. Yes. Fine. इस स्टेटमेंट में आपको ये नहीं कहा कि सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ क्या है, ये कहा इन्होंने नहीं ना कहा. दैट मींस यू कैन फाइंड द सिंपल बाय शॉर्टकट ट्रिक्स. देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशंस ऑन द ODE which is unbounded. That's wrong because we have obtained at x approaches infinity. This is bounded, so that second option is cancelled. Every solution on the ODE is unbounded on the 0 infinity because my solution is bounded. Every solution of the ODE tends to 0 as x approaches infinity. Yes, once as x approaches infinity is the final. But make sure students, अगर यहाँ पे आपको इस लिमिट की जगह पे ये लिमिट दे दी जाए तो आपको क्या चेक करना होगा? You have to check limit as x approaches infinity of the right hand side must be finite. Fine. So can you say x approaches infinity, e raised to power minus 5x goes to the infinity? That means sine of this is not my finite. Fine. So that means in that case the steady state or it is the unbounded solution. Again, you can see it's a very recent February 2025. The differential equation is given to you as y raised to power 5, y raised to power 4 plus up to 1. Y is a unique solution such that y of 0 is equal to b. Then which of the following statement is my true? Alpha is my greater than 0 for every b is my greater than alpha is greater than 0. इसका मतलब अगर मैं इस पे b अप्रोचेस इंफिनिटी पे कुछ बात करने की कोशिश करूं तो स्टेडी स्टेट बन सकता है. और यहाँ पे क्या कह रहा है? इज बाउंडेड अबव. इसका मतलब बाउंडेड की बात है तो लिमिट्स निकालनी होगी. y of b as b approaches infinity. You have to check whether this limit is finite or not. Fine. अब जैसे आपको b approaches infinity मिला, that means we can think about the steady state. Fine. Now how you can think about that? It's a very simple. You can see whenever b approaches in, what is the b? B is my solution of the y. That means whenever your y is equal to b and b approaches infinity, that means y raised to power 5 is always greater than of the y raised to power 4 is greater than 1. Or you can say y raised to power 5 dominates other terms. फाइन. तो मैं राइट हैंड साइड को सिंपल ये y की पावर 5 ही तो लिख सकता हूं बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग. फाइन. नाउ अब ये सॉल्यूशन आपका बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? फाइन. यू कैन सी द इनिशियल वैल्यू इज माई 0. सो इफ यू टेक लिमिट b approaches infinity of the y, that will goes to the infinity. So that means it is not bounded. पर यहां पे सॉल्यूशन ये पूछ रहा है whether it's a bounded below or bounded above. Fine. Now you can see because what is the lower limit? B is my greater than alpha is greater than 0. Fine.
So that means your y must be greater than 0. That means your solution limit y, that is a b is must be greater than 0. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपका सोल्यूशन चलेगा फाइन फॉर द डिफरेंट कर्व, तो आपका अपर कहां जाएगा, इन्फानेट पे. दैट मीन्स इट इज नॉट बाउंडेड above but it is bounded below. बिलो पे तो आ गया ना बाउंडेड, जीरो तो आपके पास मिल जाएगा इसका लोअर बाउंड. फाइन, तो इट इज अ बाउंडेड अबव. रॉन्ग. अल्फा इज माई ग्रेटर देन जीरो, बीटा बी इज माई ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, इज अ बाउंडेड बिलो. यस, दैट्स अ फाइन आंसर. फाइन. नाउ लुक एट द थर्ड and fourth options. Alpha is my less than 0, b is less than alpha is less than 0. That means your target is to take limit b approaches to the minus infinity. Fine. Once you take b approaches to the minus infinity, what does it means? Limit b approaches minus infinity of the y. तभी यही रहेगा ना, b is a larger number. तब ये लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास, इट विल बी माइनस इंफिनिटी. तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जीरो से ये नीचे को गिरेगा. फाइन. तो व्हाट डज इट मीन्स, इज इट बाउंडेड अबव? सो दैट मीन्स it is not bounded below but it is not bounded below, but is it a bounded above? Yes, bounded above तो जीरो मिल गया ना आपको, because upper limit is my zero. So it is a bounded below for the alpha negative? No, but it is a bounded above. Fine. So the right answer is A and C are the correct answer. स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से समझिए. क्या इस स्टेटमेंट में आपको कहा था इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या आपसे इन्होंने y ऑफ b की वैल्यू पूछी है? नो, सिर्फ ये पूछा है बाउंडेड और अनबाउंडेड. सो दैट्स वे यू कैन फाइंड द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन. ओके, कैन यू अप्लाई द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन ऑन द t? फाइन. यस, because u of x comma 0 is 0. That means you can apply the steady state solution on the t. Fine. और वही आपसे पूछ रहा है. Fine. So that means partial derivative with respect to t is 0. Remember, partial derivative with respect to x is not a 0 because x पे वो condition नहीं satisfied हुई. X is not a infinity. So whenever this condition hold, that means uxx will be 0. So once the uxx will be 0, that means u is a फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो आ गया ना. इस केस में आपके पास क्या आया था सेकंड में, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी. फाइन. कांस्टेंट कब आएगी, जब वो डिग्री 2 होगा. और अब यहाँ पे आपके पास जीरो आ गई है, तो जीरो मींस इट्स अ लीनियर. नाउ कैन यू अप्लाई दिस कंडीशन? ये कंडीशन तभी अप्लाई कर सकते हो व्हेनेवर t is approaches infinity. yes, t approaches infinity. so u of 0 आपका b is equal to 1 हो गया. And when you applied u of 2 comma t, so 3 is equal to 2a plus 1, a will be 1. So a is 1, b is 1, so your answer is x plus 1. Now your target is to find the solutions at x is equal to 1. t 1 पे नहीं पूछा. फाइन, बिकॉज स्टडी स्टेट पे नहीं है, स्टडी स्टेट आपका t पे है. x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो x इक्वल 1 पे कितना आंसर हो गया, 2 इज दी राइट आंसर ऑफ दी प्रॉब्लम. बच्चों प्रैक्टिस खूब करिए मेरी स्टडी स्टेट अप्रोच के साथ, आप आंसर देखोगे क्विकली निकालोगे आप. अगेन t अप्रोचेस इंफिनिटी. फाइन. कोएफिशिएंट देखो डेरिवेटिव्स के, पॉलिनोमियल के पॉजिटिव्स है आपके पास, तो यस यू कैन अप्लाई द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन. सो व्हेन स्टडी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू t, that will be 0. So that means y dash is 0. So that means y cube minus y square minus 2y is equal to 0. Then your answer. तो आपको solution निकालना है. इसके साथ y निकाल लेते हैं. y will be y square minus y minus 2. Fine. You can factor them. Y minus 2 and y plus 1. So your answers are y0, y2, y minus 1. But you can see whatever the solutions, they must satisfied in the 0 comma 2. So
-1 तो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ. Fine. Now your answer will be 0 and 2. So the C is the right. Fine. Remember student, these are the long run period. That means limit of the y is either 0 or 2. फाइन. और सीक्वेंस में हमने क्या देखा था, अगर आपका इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव है तो सॉल्यूशंस जहां पे भी कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स का मतलब x अप्रोचेस इंफिनिटी, वो भी पॉजिटिव पे ही कन्वर्स करेंगे. फाइन. एंड एक और दिमाग में मेरी चीज आई, क्या यही कंसेप्ट आप सीक्वेंस में भी तो लगा सकते हो आप, बिकॉज सीक्वेंस में आप क्या करते हो, आप सीक्वेंस में भी तो लिमिट ही लेते हो आप, n अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ xn. फाइन. तो यहां पे भी स्टडी स्टेट लग जाएगी आपकी अप्रोच. फाइन. क्वेश्चन उठाओ सीक्वेंस के और ट्राई करो उसके साथ. ओके. x अप्रोचेस इंफिनिटी, so yes, you can apply the steady state approach. Fine. So that means d over dx will be 0. d square over dx square will be 0. But देखो आपका टारगेट क्या है, y of x. क्या ये x आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, आपका ये सोल्यूशन है ना y of x, ये तो इसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा. दैट मीन्स यू कैन नेवर अप्लाई, not applicable the steady state solution on this problem. Fine. ये यहाँ पे स्टडी स्टेट अप्रोच नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज 4 जो आपका 4 है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंफिनिटी. फाइन. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट. अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो देन यू कैन लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा. ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी. फाइन. यस, यू कैन अप्लाई द स्टडी स्टेट, बट आपको सोल्यूशन किस पॉइंट पे पूछा है, ई पे, विच इज नॉट एज द इंफिनिटी. फाइन. तो दैट मीन्स कैन यू अप्लाई द स्टडी स्टेट, नो. फाइन. तो स्टडी स्टेट आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट बिलीव मी आई विल टेल यू अगेन द 15 सेकेंड अप्रोच हाउ यू कैन सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन द 15 सेकेंड. इधर चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे दिस क्वेश्चन हो, आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो. दैट आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट. उसके लिए आपको कमेंट करना होगा whether you are interested or not. Okay, look at that. Y is there. Okay, now you can see x approaches infinity. Fine. तो पहली बात, कोफिशिएंट्स आपके पास x approaches infinity कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. सेकंड कंडीशन क्या था, कोफिशिएंट्स ऑफ द y डैश y डबल डैश आर पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव है. एंड the limits of the right hand side is finite as x approaches infinity. Yes, इसकी लिमिट आपकी finite है. तो yes, you can apply the steady state approach. But अगर आप ऑप्शन में देखो, can you apply the steady state approach on the fourth part? No. Why? Because 1 is not the part of infinity. So that means y is equal to 1 is 0. ये steady state approach से आप नहीं निकाल सकते. Can you apply the steady state approach on the y is equal to 0? Again no, because 0 is not the part of the steady state. तो मैं सेकेंड और फोर्थ पार्ट को इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूंगा. Can you say the y is a bounded function? Can you apply the steady state? बाउंडेड के लिए आप क्या चेक करोगे, आप लिमिट x approaches infinity of the y is my finite. फाइन. इसका मतलब यस, मैं थर्ड ऑप्शन को इससे सॉल्व कर सकता हूं, और x अप्रोचेस इंफिनिटी लिखा ही हुआ है, तो मैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. तो क्या होगा, d ओवर dx आपका 0 हो जाएगा. फाइन. बाय यूजिंग द स्टडी स्टेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, तो दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज 0. लिमिट x अप्रोचेस infinity, I can multiply this number by e की power 2x. The right hand side is e raised to power x, and if you take the limit as x approaches infinity, which is again 0, so the right answer of the first part is 0. That's a fine answer. Fine. Now you can see whether y is a bounded function or not. अब यहाँ पे अकेला y पूछा है, इसका मतलब आपको लिमिट निकालनी है x approaches infinity. Fine. तो x approaches infinity की लिमिट लीजिए. अगेन द फर्स्ट टू पार्ट्स आर 0, द राइट हैंड साइड इज e raised to power minus 3x as x approaches in 0. So that is my 0 which is finite. Fine. But आपकी डोमेन क्या है, R.
तो आर में तो आपकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी भी तो है। फाइन, तो जैसे आप माइनस इन्फिनिटी लोगे, व्हाट इज द राइट हैंड साइड? इज इट अ फाइनाइट? That goes to infinity, so that is not finite. So once it is not finite, what does it means? It is not bounded. Fine, so the third option is answer. Clear? Now अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैसे सॉल्व कर, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन कैसे सॉल्व करोगे, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फाइन, एज यू नो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, लुक एट दैट एक्स. इसका मतलब यहां पे तो आप स्टडी स्टेट लगा सकते हो. Fine, condition must be, first value must be positive, x is a positive, so yes, and the right hand side limit is a positive. Fine, तो इसका मतलब आप यहाँ पे स्टडी स्टेट अप्रोच लगा सकते हो आप. तो अगर स्टडी स्टेट इसका सोल्यूशन क्या है, y1, so you can see कोई भी एक x ले लेते हैं, any number between them. Fine, so if you apply the steady state solution, what will happen? X approaches infinity, of y is my 0, ये तो 0 हो जाएगा ना. Fine. So for what value of the x? That means y1 is a solution. So as x is a very large number, इसका मतलब how many x they will satisfied? You have infinitely many x. Fine. So you have the infinitely many value of the x, so that y1 of the x will goes to the 0, as because for the longer period its value is 0. So if you choose x is 10 raised to power 9191. If you choose 10 raised to power 91120, both are almost large, and you can get the value as infinite 0. That means y1 has infinitely many zeros. Y1 has finitely many zeros is the wrong answer. Fine. Otherwise आप सेकेंड वे कैसे कर सकते हो? आपने x की वैल्यू को 1 लिया, एनी नंबर विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? Fine. So that means y is equal to c1 cos x plus c2 sin x. Now on this domain, x approaches infinity. That means x is belongs to the R. Sin x and cos x has infinitely many solutions or infinitely many zeros. So yes, you have A is the right answer, C is the wrong answer. लेकिन ये तो बच्चों सॉल्व करना हो गया ना. मैं आपको बता रहा हूं विदाउट सॉल्विंग कैसे एग्जाम में क्विक अप्लाई करते हो. चलिए लुक एट द सेकंड वन. कैन यू से y2 इज द सॉल्यूशन zeros. y2 का इसका कोएफिशिएंट 1, दिस इज 1, बट इफ यू टेक एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, फाइन, तो तब तो ये आपके पास फाइनाइट नहीं हुआ. तो द स्टडी स्टेट अप्रोच ऑन द पार्ट बी इज नॉट एप्लीकेबल. फाइन, तो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दैट वी विल सी इन द पार्ट सी. नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट. चलिए, कैन यू अप्लाई द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन ऑन द t इज इक्वल टू 0, t is 0. You can see sine of x 0 is not a 0, so yes, you can never apply the steady state solution. बच्चों ये बहुत जरूरी है एग्जाम में पकड़ना कि कब लगना है कब नहीं लगना भी. फाइन, लेकिन ये इक्वेशन किसकी है, हीट इक्वेशन की. तो एज आई मेंशन यू, आप इस हीट इक्वेशन के लेक्चर को देखो, तो योर सॉल्यूशन यू कैन राइट इन अ 15 सेकंड टाइम पीरियड. व्हाट इज द n is pi e raised to power minus n square, c is my 1 into sine of pi x. अब जिसका सॉल्यूशन पूछा आपसे, किसका पूछा आपसे, x कॉमा 1 ओवर पाई स्क्वायर, कितना हो गया, फाइंड e raised to power minus 1 sine of pi x is the right answer. तो देखो कहां पे आंसर है, e की पावर माइनस 1x, e की पावर माइनस 1 साइन, सो दैट्स द सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दी. देखिए 15 सेकंड लगे, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स लगी आपकी हीट इक्वेशन की. ओके, कैन यू अप्लाई द स्टडी स्टेट सॉल्यूशन, अगेन नॉट, बिकॉज आपको ये जीरो नहीं है. फाइन, you can remember that ux comma 0 must be 0 in order to apply the steady state solution. फाइन, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अगेन हीट इक्वेशन है, तो आपका x comma t कितना हो गया, e raised to power minus n square, c is my 1, fine, into sine of x. So your target is to find the value of pi by 2 comma 1.
So e raised to power minus 1 sine of pi by 2 1 over e is the right answer of the problem. Okay, can you say it's a y is a, again you can see at infinity, at infinity, at infinity. So can you apply the steady state solution? Fine. So we will check about the properties. The first property is क्या होना चाहिए? X approaches infinity होना चाहिए, वो given है आपके पास. Coefficient of the y dash, y double dash, all are my positive. वो है आपके पास. Fine. And third one is limit of the right hand side is my finite when x approaches प्लस इंफिनिटी. प्लस इंफिनिटी चाहिए ना आपको, तो इसकी लिमिट प्लस इंफिनिटी पे फाइनाइट है. तो यस यू कैन अप्लाई दी स्टडी स्टेट सॉल्यूशन. तो स्टडी स्टेट निकाल दो, फिर कितना आएगा. इसकी वैल्यू कितनी है? 0. इस ट्वाइस लिमिट ऑफ y. व्हाट इज द लिमिट ऑफ द राइट हैंड साइड? 0. सो लिमिट ऑफ द y इज माई 0 as x approaches infinity. The first answer is correct. Second answer is wrong. Fine. Because यहाँ पे they are independent of the alpha. Alpha की कुछ मर्जी वैल्यू हो. There exists an alpha such that limit exists, yes, but the value is different from the 0 and 1. That's strong. Value must be 0. There exists an alpha such that the limit x approaches does not exist. That's strong. Limit must be 0. Right answer is A is the correct answer. Fine. Otherwise, अगर आप किसी और तरह से करना चाहो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप एग्जाम में, और मोस्टली आपने करा भी ऐसा ही होगा एग्जाम में. यू हैव सीन द इक्वेशन इज देयर. यू कैन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power 2x. Then you can write as a solution e raised to power 2x, which is e raised to power 2x divided by 1 plus x square into dx, and then solve it and get the values of their ducat. But that will need a 5 minutes टाइम पीरियड्स. बच्चों ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा. जितना मर्जी पे कर दीजिए किसी को भी, आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को पे कर दीजिए, नोबडी टेल यू दिस शॉर्टकट ट्रिक्स. फाइन. हाँ, अब मैंने बता दिया, अब हो सकता है कोई बता दे आपको, दैट्स अ सेपरेट इशू. ओके, लुक एट दिस अनदर क्वेश्चंस. ओके, आई कैन गिव यू दिस क्वेश्चन एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. फाइन. सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप वाकई इस मेरे इस लेक्चर को लास्ट तक देखे भी हो, समझ भी पाए कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेल मी आंसर. Can you say the steady state approach is applicable on this problem or not? Ali case, अगर yes, fine, fine. अगर yes है, तो what is the answer of the problem? Fine. Steady state अप्लाई करने के लिए वो तीन मेथड, आप तीन स्टेप चेक कर लीजिए. अगर है, then you can find this limit. Fine. अगर तो इसका आंसर 0 हो गया, मान लो इसका आंसर 0 हो गया, तो कितने x मिले आपको ऐसे? कितने x मिलेंगे आपको ऐसे? x has infinitely many values. फाइन. अभी तो यहां पे यही तो देखा था हमने किस एग्जांपल में, इस एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में. इसमें भी लिमिट y ऑफ 0 आई थी ना आपकी. लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी पे. फाइन. y ऑफ x गोज टू दी 0 एज x अप्रोचेस इंफिनिटी वाले में. तो कितने x इंफिनिटी पे पहुंचेंगे? बहुत सारे मिल जाएंगे ना. एक 10 की पावर 91 होगा, या 9191 होगा. दूसरा भी तो आप ले सकते हो 9120. बोथ आर वेरी लार्ज नंबर. सिमिलरली सॉन दे हैव इनफाइनाइटली मेनी x. सेम अप्रोच से अगर तो ये स्टडी स्टेट है, if this question is applicable the steady state, then you can tell me yes it's a steady state, and then what will be your answers. Fine. So again your target is to find the x. मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, rest you can do it by own. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. यू कैन सपोर्ट माई एफर्ट्स. आई डिड माई एफर्ट्स ओनली फॉर ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट. फाइन. We will see the next part very soon. Till then, you can share this video. You can hype this video, like and comment on it. Happy learning, students. Thanks for the watching. Best wish.